नॉन इश्यू को लेके। Honorable members, I have received one notice under Rule 267 seeking discussion on the problem of farmers. I do not find the same in order and therefore I am unable to agree to that. Matters with permission 0 hour. Shri A.D. Singh, nothing will go on record. Shri A.D. Singh, demand to grant more visas to technical experts from China. Thank you, Chairman, sir. Private sector enterprises from footwear and textile to engineering and electronics in India have purchased huge machinery from China but are unable to use them productively without the help of Chinese technicians. The machinery is lying idle and export orders remain unfulfilled. The Secretary Department for Promotion of Industries and Internal Trade has accepted the claim by Indian companies that a significant skill gap exists between Chinese and Indian factory supervisors and workers. The leader of these private companies are of the view that Chinese professionals are highly productive and are less expensive. In view of this, the Engineering Export Promotion Council of India is of the view that more visas should be given to Chinese experts so that the machinery in India can be put to efficient use. Hence, strategies should be designed in such a way that experts are issued visas after due diligence, keeping in view national security. The process should be expedited. Thank you. Thank you. Honorable Sri Jose K. Mani, concern over rising cases of non-communicable diseases in the country. Honorable Jose K. Mani, not present. He is present. Please. You always forget me, sir. Please. No. I raised today to draw attention to a growing public health crisis in the country. The rising cases of non-communicable diseases, NCDs. These diseases include diabetes, cardiovascular disease, cancer, and chronic respiratory disease, are now responsible for over 60% of the death in India, according to the World Health Organization. In 1990, this was around the 38%. Alarmingly, these diseases are increasingly affecting your younger populations, particularly those in their 30s and 40s. The economic impact of NCDs is severe. 1 in 4 Indians has a risk of dying from an NCD before they reach the age of 70, and majority of them die at a young age. Every life lost is not just a personal tragedy, but also a loss of our nation's progress and potential and to the family. At the heart of this crisis is poor lifestyle choices such as unhealthy diets, lack of physical activity, smoking, and excessive alcohol consumption, and also high level of air pollution. So limited access to primary health care, lack of preventive care, and insufficient early detection mechanism mean many of these non-communicable diseases go undiagnosed until it is too late. Large Indian companies and multinational companies in India often use pesticides excessively and irrationally in food production to maximize yield and profit. This contaminates crops, soil, and water, leaving harmful chemicals in food consumed by the public. These pesticide-laden foods have been linked to the rising incidence of non-communicable diseases. With the rise of consumerism, our population, especially the youth, are lured by multinational companies into unhealthy food habits. The government's current efforts are insufficient in addressing this epidemic. So the government should, with immediate effect, bring stringent regulations, ensure its effective and time-bound implementation. This includes stringent regulation on harmful food practices. All health hazard items used in food production should be banned. Nationwide campaigns promoting healthy living, better healthcare infrastructure, and fostering a culture that prioritizes well-being of consumerism. Thank you. That health is not a privilege, but a promise kept for every single. Thank you, Honorable Jose K. Mani.
Mania Dr. Kalpana Saini demand to organize a special classes of traditional sports in schools. Dr. Kalpana Saini. माननीय सभापति महोदय, वर्तमान समय में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों में पारंपरिक खेलों की विशेष कक्षाओं के आयोजन के संबंध में सुझाव देना चाहती हूँ, जो अत्यंत महत्वपूर्ण और समय की आवश्यकता है। आजकल बच्चे ज़्यादातर इंटरनेट की दुनिया में सीमित हो चुके हैं, जिससे उनके शारीरिक विकास और मानसिक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। पारंपरिक खेल न केवल शारीरिक क्षमता बल्कि मानसिक दक्षता का भी विकास करते हैं, जो बच्चों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। ये खेल किसी अतिरिक्त बजट या धनराशि की आवश्यकता नहीं रखते, जैसे कबड्डी, खो खो, जो बजट फ्रेंडली हैं और आसानी से स्कूलों में आयोजित किए जा सकते हैं। इन खेलों के आयोजन से बच्चों को शारीरिक सक्रियता के साथ साथ टीम वर्क, संघर्ष और रणनीति सीखने का भी अवसर मिलेगा। शुरुआत में शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर के इसकी शुरुआत की जा सकती है, ताकि वे बच्चों को पारंपरिक खेलों से परिचित करवा सकें। इसके लिए डॉक्यूमेंट्री और इन्फोगेटिव वीडियो जैसे माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है, जो बच्चों में उत्सुकता और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करेंगे। इस प्रकार की गतिविधियों से बच्चों को शारीरिक फिटनेस में सुधार होगा और वे स्वस्थ जीवन की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, जो उनके समग्र विकास के लिए लाभकारी होगा। मैं सदन के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से निवेदन करती हूँ कि स्कूलों में नियमित रूप से विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जा सकता है, जिनमें बच्चों को पारंपरिक खेलों के महत्व और उनके इतिहास से परिचित कराया जा सकता है। इन कक्षाओं के माध्यम से बच्चों को न केवल खेलों के बारे में जानकारी होगी, बल्कि उन्हें इन खेलों को खेलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। गर्मियों की छुट्टियों में स्कूलों द्वारा हिल स्टेशनों पर समर कैंप आयोजित किए जा सकते हैं। इन प्रतियोगिताओं के आधार पर बच्चों को पुरस्कार दिए जाएं, जो उन्हें उत्साहित और प्रेरित करेंगे और खेलों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री तिरुचि शिवाजी, डिमांड फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू विक्टिम्स ऑफ डिवास्टेशन कॉज्ड बाय साइक्लोन फेंगल इन तमिलनाडु। Thank you, Mr. Deputy Chairman. Sir, through the chair, I draw the attention of the government to act with urgency in addressing the severe and widespread devastation caused by Cyclone Fengal. Sir, the Cyclone Fengal emerged as a low pressure in November 24, and it brought too much of rain in Tanjavur, Tiruvarur, Nagapattinam, Mayiladuthurai and Tiruchirappalli. Later, it hit the shore. The cyclone hit the shore on December 1st and 2nd, causing a great damage across. It has ravaged 14 districts, directly affecting 1.5 crore people, displacing 69 families, and has costed 40 precious lives, along with 3,000 cattle and 250,000 poultry. Sir, heavy rainfall exceeding 50 centimeters in one day has totally submerged the districts of Viluppuram, Kadalur, Tiruvannamalai and Kalakurchi. There were also damage in Chennai, Chengalpet, Kanchipuram, Tiruvallur, Vellur, Ranipet and Krishnagiri. Sir, the Tamil Nadu government has deployed a workforce of 38,000 officials and 120,000 first responders who actively engage in relief and rescue operations. The NDR of 9 teams and the SDR of 9 teams all were there. Despite these commendable efforts, sir, the scale of destruction far surpassed the scale, the state's capacity to recover independently. So the initial assessment has told that we need a 2,475 crore, but the government has demanded 2,000 crore as immediate relief from the union government. Sir, we are worried, sir, the past inadequacy in disaster relief. We asked for 37,000 crore, but it was given only a paltry 267 crore. Sir, it is very necessary. This has caused a great damage. This cyclone of Fengal requires a decisive and compassionate response. I would urge the sir, helping out at the time of need, or is of course a test of federal governance and federal solidarity. I would urge the Ministry of Home Affairs to act with urgency to
to demonstrate fairness and sensitivity in this issue. And the Tamil Nadu Chief Minister has written a letter to the Prime Minister also. So kindly release the 2,000 crore rupees for interim relief, which would only rescue the people, sir. People are totally lost their livelihoods. So many houses have been washed out. Still, it has not been recovered. The rains are coming, and Tamil Nadu is in a distressed position because of the cyclone, and we have approached in the right manner. Now also, I have drawn the attention of the House. Kindly act with compassionate with the state's concern. Thank you very much. Thank you. Honorable Sri Saket Gokhale, need to improve the well-being of employees in private sector companies. Thank you, Deputy Chairman, sir. So there is something I wish to bring to the notice of this House, a very important issue. So on 20th of July this year, a young 26-year-old woman called Anna Sebastian, she suddenly died. She was found dead. Her mother then wrote an open letter on social media where the mother said that her daughter had died because she was made to overwork in the company where she was working. The company happens to be one of the big 4 consulting companies, a multinational. So similarly, before that in February, Satish Nangaonkar, a journalist working with a very major Indian newspaper in Mumbai, suffered a cardiac arrest. At that time also, his family, even the press council at that time, said that this happened because at work, the boss allegedly was very toxic, kept berating him, kept insulting him. So after these 2 shocking incidents, there's been a groundswell of complaints also on social media from people in the private sector saying that a lot of times today, there is a toxic work culture. There is a work culture where employees are made to work long hours. There is, employees are subject to insults. A lot of this is happening in private companies today, sir. So for me also, it is very important, this issue, because we're talking about private companies. So today, because in my state, this is important. Bengal, sir, means business. Today, the reason this is a priority for me is because we have more than 1.45 lakh active companies in our state. So today, our IT sector in West Bengal employs more than 2.6 lakh employees. So the private sector reform is very important, sir. So why I wish to draw this House's attention to this particular issue is for this reason. So this year, government revenue from corporate taxes was less than government revenue from income taxes. Who are paying these income taxes, sir? These are people working in private companies. I'll just give some of the examples in which they're subjected to a very toxic atmosphere, sir. So there is no overtime pay provision in contracts in India. People are made to work 8 hours, 10 hours, 12 hours. There's no provision for overtime unlike other countries. So a lot of employees that work in client-facing companies, they're subject to whims of their clients. They're made to, the clients call them on the weekends. So there is a need for our labor laws to regulate these, sir. We don't have legislation right now to regulate it. What happens, sir, is employees lose their jobs, unemployment happens. Today the condition is so bad, sir, that people who have worked in my state of West Bengal have not been given their Manrega dues, sir. We have total pending dues of 8,377 crores. These are people who have worked, sir. Now when people lose their jobs, they get this sort of deprivation, sir, which is why I'm saying, sir, this toxic work culture, deprivation of people is something, sir, this House needs to take seriously, the government needs to take seriously. People who are employed need a healthy work atmosphere, and people who have worked need to be paid, be it in the private sector, be it Manrega workers in West Bengal, sir. Thank you very much. Thank you. Honorable P. Wilson, demand to expedite the work related to infrastructure and tourism development projects in Tamil Nadu. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, there has been a persistent neglect and inequitable treatment faced by the state of Tamil Nadu in the hands of union government, which has led to the stalling of various infrastructure works and tourism development projects. The compensation mechanism promised under the new GST regime was abruptly stopped by the union government in the year 2022, resulting in an annual revenue loss of 20,000 crores for Tamil Nadu. The union government's increasing reliance on cesses and surcharges has severely restricted Tamil Nadu's share in the divisible pool of taxes. In the financial year 2022 to 2023, the union government collected 5.1 lakh crore through cesses and surcharges. If these collections has been included in the divisible pool, Tamil Nadu would have received an additional amount of rupees 20,800 crore in just 1 year. Further, unfair limitation on states' borrowing ability by fixing a ceiling of 3% of GSDP have led to a loss of 8,500 crores in borrowing space over the last 4 years,
which impacts Tamil Nadu's ability to finance critical public infrastructure and welfare projects. In the Union budget for 23-24, Tamil Nadu was allotted a mere 2.5% of natural resources, which is inadequate. The Union government has been progressively shifting the burden of centrally sponsored schemes on the state government. Classical example is affordable housing in partnership, wherein Union government contributes rupees 1.5 lakhs per unit, whereas the government of Tamil Nadu contributes around rupees 12 to 14 lakhs per unit. Over the last 4 years, the total allocation for railway projects in Tamil Nadu has been equivalent to the annual railway budget for Uttar Pradesh. Various major railway projects have been stalled due to the insufficient fund allocation. No mega infrastructure projects, including highways, has been sanctioned for the last 10 years in our state. The proposal for various tourism development projects in Tamil Nadu, including transformation of Rameshwaram town, the nature trail in Payakara Ooty, Shore Temple Garden Mamalapuram, has been submitted and needs the Union government's immediate attention. The approval and works for the Parandur Airport, Hosur Airport, Greenfield Kadalur Port, metros for Kovai, Madurai, Hosur, expansion of Kovai, Tiruchi, Madurai and Tuticorin Airport has to be expedited by the Union government. Tamil Nadu has been a beacon of progress, contributing significantly to India's economy and development. Yet, the systematic denial of its rightful resources and support has immensely strained the state fiscal health. I request the Union government through the Honourable Deputy Chairman, sir, to address these issues urgently and provide the state of Tamil Nadu with a fair share of resources and support. Thank you, Deputy Chairman, sir. Thank you. Honourable Sri Babu Ram Nisad ji, demand to start superfast train from Kanpur Central to Somnath. बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति जी। कानपुर से सोमनाथ तक नई ट्रेन चलाने के संबंध में माननीय उपसभापति जी, इस सदन के माध्यम से मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि कानपुर सेंट्रल से सोमनाथ के लिए बाया कानपुर सेंट्रल, हमीरपुर रोड, सुमेरपुर, रागौल, बांदा, चित्रकूट, सतना, जबलपुर, इटारसी से होते हुए वेरावल सोमनाथ तक प्रतिदिन एक सुपरफास्ट ट्रेन चलाने हेतु आग्रह कर रहा हूं। इस रूट पर कोई भी ट्रेन सोमनाथ के लिए उपलब्ध नहीं है। इस रूट पर माननीय सभापति जी, रेल का आवागमन न होने के कारण दैनिक रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और अन्य महंगे साधनों से यात्रा करने पर विवश होना पड़ता है, जिसमें इनके धन और समय दोनों की बर्बादी होती है। माननीय उपसभापति जी, इस रूट पर ट्रेन के आवागमन से प्रभु श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट धाम, शक्तिपीठ माँ मैहर देवी सतना, महाकाल ज्योतिर्लिंग उज्जैन एवं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता होगी और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात के आम जनमानस को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे एवं रेल राजस्व में बढ़ोतरी होगी। यह ट्रेन बुंदेलखंड के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। माननीय सभापति जी, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी उपरोक्त मांग के संबंध में उचित कार्रवाई करके क्षेत्र की जनता को रेल विकास की सौगात अवश्य देंगे और ये मेरी मांग जो कानपुर से सोमनाथ के लिए ट्रेन चलाने की है स्वीकारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निषाद जी। माननीय श्री संदीप कुमार पाठक जी, नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ राइस मिल्स इन पंजाब। धन्यवाद चेयरमैन सर। सर, आज मैं आपके माध्यम से पंजाब में जो एक आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट किया गया, जिसमें कि किसानों को, आढ़तियों को और राइस मिलर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उसके बारे में बातें रखना चाहता हूं। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पूरे देश में जहां जहां पर भी खेती होती है उससे संबंधित है। ऑनरेबल चेयर सर, अनाज को खरीदने की एक प्रणाली होती है, एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में जो किसान है वो मंडी में जाता है और मंडी पे अपने अनाज को बेचता है। मंडी से फिर वो राइस मिलर्स के पास आती है पूरी अनाज, वहाँ पर उसका मिलिंग होकर वो एफसीआई के गोडाउन पे जाता है। एफसीआई के गोडाउन पे जाता है, वहाँ से फिर कई राज्यों में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर इस पूरी प्रक्रिया में एक भी कड़ी को हटा दिया जाए या डिसरप्ट कर दिया जाए तो सीधे सीधे किसानों को, आढ़तियों को, राइस मिलर्स को बहुत नुकसान होता है, बहुत हिट करता है उनके बिजनेस को। अब आप ये मानिए कि पंजाब में इस बार धान खरीदी के समय जो एफसीआई के गोडाउन्स थे वो खाली नहीं किए गए। उसके अलावा 2 लाख मीट्रिक टन जो राइस मिलर्स के पास पहले से पिछली फसल के जो स्टोर्ड धान थे
वो उसको हटाया नहीं गया। तो जब आपके गोडाउन्स और राइस मिलर्स में जगह ही खाली नहीं बचेंगे तो प्रोक्योरमेंट हिट होगा। इससे क्या हुआ कि किसान लाइन लगाकर मंडी पे खड़े रहे, लाइन लगाकर मंडी पे खड़े रहे, उनको कई जगह सस्ते हड़बड़ी में डर में सस्ते रेट पे देना पड़ा। इसके अलावा यह भी हुआ कि किसान की अगली फसल में देरी हुई, किसानों की अगली फसल में देरी होती है, पूरे सीधे देश के इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ता है। आड़तियों को फर्क ये पड़ता है, पहले 2.5% एमएसपी पे दिया जाता था, आज केंद्र सरकार ने उसको सीधे सिर्फ फिक्स कर दिया 45 रुपए पे। बहुत ज्यादा नुकसान है उनको। राइस मिलर्स को अगर आप लेंगे, राइस मिलर्स की जो फायदे होते हैं, वो जो मिलिंग करते हैं उस पे जो बाई प्रोडक्ट बचता है उसी पे फायदा होता है, उनका मिलिंग रुक गया। इस तरीके से जो एक पूरा इकोनॉमिक एग्रेरियन स्टेट्स के इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया। पंजाब सरकार ने पिछले 6 महीने में 7 चिट्ठियां लिखी, उसका कोई जवाब नहीं आया। यह रिक्वेस्ट किया गया कि जो गुड्स की ट्रेन्स होती है जो 18 है उसको बढ़ाकर 36 किया जाए। मेरा यह मानना है कि अगर इस तरीके से हम एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस को डिसरप्ट करेंगे तो आप मुझे यह बताइए, आपके माध्यम से मैं ये देश से पूछना चाहता हूं, क्या एफसीआई के पूरे प्रोसेसेस स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है? क्या एफसीआई के टाइमलाइन कैलेंडर में फ्रोजन नहीं है कि फलाने महीने के फलाने तारीख को फलाने चीज होनी है? और अगर ये फिक्स्ड है तो ऐसा क्या हुआ इस बार? ऐसा क्या हुआ इस बार कि इस पूरी प्रक्रिया को अस्त व्यस्त किया गया? क्या सरकार किसानों से अभी भी बदला लेना चाहती है? क्या केंद्र सरकार उस काले कानून वाले मैटर पे अभी भी बदला? मेरा यह सबमिशन है, आपने किसानों की बात मानकर बड़ा दिल दिखाया है, आप उसका क्रेडिट लीजिए, वो बड़प्पन। टाइम खत्म हो गया आपका। माननीय प्रमोद तिवारी जी, प्लीज आपस में बात करें, प्लीज। माननीय उपाध्यक्ष जी, आप सीट पर बैठकर ना बोलें। संजय जी, आप प्लीज सीट पर बैठकर ना बोलें। देश के युवाओं की बड़ी संख्या में आज नशे के गिरफ्त में है। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो चिंता का विषय है। मादक द्रव्यों का सेवन देश के शारीरिक और सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट रिपोर्ट के अनुसार देश के आबादी के 10 से 75 वर्ष तक के करीब 20% लोग किसी न किसी तरह नशे के आदी हैं। एक सरकारी एजेंसी अवैध ड्रग कारोबार का आकार लगभग 30,000 करोड़ रुपए आती है। 2014 से लेकर 2023 तक जून तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जब्त किए गए नशीले पदार्थों की मात्रा में लगभग 100% की वृद्धि हुई है और इससे निपटने वालों के मामले दर्ज मामलों में 152% की वृद्धि हुई है। सरकारी आंकड़ों में नशा करने की वजह से 2017 में से 7 से 45, 2018 में 8 से 75, 2019 में 7 से 4 लोगों की मौत हुई। सबसे ज्यादा मौत राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हुई है। इससे 30 से 45 आयु वर्ग के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। नशाखोरी से उपजी समस्याओं के चलते औसतन 7-8 लोग रोज आत्महत्या करते हैं। प्रमुख भारतीय शहर अब सिंथेटिक ड्रग से भरे पड़े हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमाओं से ड्रग की तस्करी के लिए कई मामले सामने आ चुके हैं। नशीली दवाओं की तस्करी से भारत की सीमा सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। जब जब ड्रग्स की सप्लाई की बात होती है तब गुजरात के मुंद्रा पोर्ट का नाम जरूर आता है। ये बंदरगाह नशे की सप्लाई को लेकर बदनाम हो चुका है। कुछ महीने ही गुजरते हैं कि मुंद्रा बादशाह में नशे की खेप की बरामद करने की खबर आ जाती है। यह बड़ी पोर्ट है जहां 21,000 बड़ा पोर्ट है जहां 21,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। मानवर, इस पोर्ट में आए दिन करोड़ों की सिगरेट भी जब्त होती है। गुजरात ड्रग का सेंटर बन गया है और सारे ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट से निकल रहे हैं, लेकिन सरकार यहां कार्रवाई नहीं कर रही है। गुजरात के युवाओं के भविष्य नष्ट हो रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, क्योंकि मुझे आपके माध्यम की जरूरत है, क्योंकि इस मुंद्रा एयरपोर्ट के मालिक अडानी है। आप विषय पर बोले प्रमोद जी। विषय पे बोल रहा हूँ प्रमोद जी, विषय पर बोलिए। सिर्फ आप आ गए तो मैं विषय पे ही बोलूंगा। मानवर, मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 3 वर्ष देखें तो मुंद्रा एयरपोर्ट गुजरात में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सीधे ड्रग्स आ रही, जो अडानी का ड्रग है। अब बताइए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से कनेक्शन
किसका है? मैं कहना चाहता हूं इनके दोस्तों का है, और इसीलिए तो मुंद्रा एयरपोर्ट से आ रहा है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अडानी के एयरपोर्ट से सस्मित पात्रा, Honorable Good. Chairman, sir, I rise to today place before the Honorable House the alarming situation in the country due to the high pendency of judicial cases. As per the National Judicial Data Grid of India, there are more than 4.5 crore cases pending in various courts in India as on date. Out of those 4.5 crore pending cases, about 60 lakh cases are presently pending in the Honorable High Courts of India, and more than 82,000 cases are pending in the Honorable Supreme Court of India. There are various reasons for it, apart from inadequate judge strength, judicial vacancies, procedural delays, etc. But I'm not here to talk about the problems, talk about the solution. The solution is the implementation of the national litigation policy that has been pending since 2010. I hope that the government will take due course of action and ensure that by implementation of the national... Question hour, and honorable members from 1 to 2 will take remaining 0 hours. Is that okay? Yes, sir. Okay. Is it sense of the House? Yes, sir. Is it sense of the House? ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.